तो ये ऑटो देखो क्या बोलते हैं गन मास्टर G9 मिथुन दा इनका ऑटो है और भैया उस तरफ है, मैं आपको उनसे भी मिलाता हूँ। और अंदर देखो तो भैया इधर है। भैया ये इसका थीम क्या है, मतलब क्यों है, ये कैसा थीम है, आपको बहुत पसंद है? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं तैयार हो गया हूँ, कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ अभी। और आज हम लोग का एक पैनल डिस्कशन है, उसमें आपको मिलवाता हूँ कौन कौन आ रहे हैं क्या है करके। वहाँ पे पहुँचते हैं कॉलेज, उसके बाद आपको बताता हूँ क्या है। तो आज जो पूरा ब्लॉग है वो ऐसे लॉयर है। गाइस मैं ना अपने स्टॉप में था और मेरे को ना कुछ मिला है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, एक सेकेंड देखो। तो ये ऑटो देखो क्या बोलते हैं गन मास्टर G9 मिथुन दा इनका ऑटो है और भैया उस तरफ है, मैं आपको उनसे भी मिलाता हूँ। और अंदर देखो तो भैया इधर है। भैया ये इसका थीम क्या है, मतलब क्यों है, ये कैसा थीम है, आपको बहुत पसंद है? अच्छा ठीक है। तो भैया मेरे को बता रहे थे कि आपका गूगल में बहुत सारा है ना, यूट्यूब गूगल में है, हाँ इंस्टाग्राम सब पर चल रहा है मेरा वीडियो। अरे वाह, अच्छा वो मुझे मिल गया, मैं खुद एक ब्लॉगर हूँ भी, आपको नहीं पता है। थैंक यू। तो मस्त एक नंबर, चलो मिल। हेलो हेलो सर। ठीक है। Great nation through the simple yet profound act of voting. Indeed, today we are honored to have with us our esteemed guest and speaker of the event, Mr. Avinash Samal sir, Assistant Professor and Dean at Hidayatullah National Law University, Raipur. We welcome you, sir. We the citizens of India, having abiding faith in democracy, hereby pledge to uphold the democratic traditions of our country and the dignity of free, fair and peaceful elections, and to vote in every election fearlessly and without being influenced by considerations of religion, race, caste, community, language, or any inducement. Chancellor Dr. W. Salamurthy sir, it is my proud privilege first of all to welcome Dr. Arvind Samal, Assistant Professor of the Dean and Dean at HNLU Raipur over here. What a wonderful personality over here. In fact, I was interacting with him. I also welcome Ms. Shivani Kapoor, Associate at ADR, who is the lead for this particular program, Major political systems of world, international relations and public policy processes. Respected sir also holds experience and expertise in courses like regulatory reforms and governance, comparative public policies and many others. His impactful publications includes books titled Policy Analysis and Evaluation, Public Policy Processes, Institutions and Actors, and also towards decentralized governance in Lakshadweep are some of his prolific contributions to the world of wisdom. Respected sir emerges not only as an academic but also as a bridge builder, contributing valuable perspectives to the ongoing dialogue on creating a more effective and equitable society. We welcome you, sir. Further introducing Ms. Shivani Kapoor ma'am, a distinct democracy. She holds a LLB from Bharatiya Vidyapeeth and an LLM in Human Rights, Constitutional Law and International Law from the Amity Institute of Advanced Legal Studies. To be a very part of this family, my professor Dr. Avinash Samal, who is one of the most inspiring person that I have witnessed in my short academic career. Then also mentioning Ms. Shivani Kapoor, who has been at the epitome of fighting in the legal academia as well as in the Supreme Court. Each speaker for an introductory remark, and after that followed by a series of questions
that the panel shall be answering, and followed by your question and answers. So, without further ado, I would like to pass on the mic to starting with Dr. Avinash Samal sir. So, sir, for first 5 minutes, the mic is yours. Thank you. 75th year of our Indian Republic, and there have been, ups and downs as far as your democratic system of governance is concerned. There have been, questions raised with regard to the credential or credibility of democracy as a political system working in India. I'll tell you, there are two scholars that New Zealand, Australia, South Africa, Brazil, Mexico, there are all these countries which have gone into, problems as far as defection is concerned. And I would, if I correctly remember, name 3 British Prime Minister who have also defected from one party to another party. I'll tell you, this celebrated Prime Minister Winston Churchill was the wartime Prime Minister. He came into the political scenario as a Conservative Party member in 1900, switched over to Liberals in 1904, then switched over to Conservative in 1924, finally became the Prime Minister in 1940 during the Second World War. And when he did that, he was called by his colleague as a Blenheim rat, who ratted and re-ratted. He came through the Conservative Party to the Democratic Party, went back to the Conservative Party, finally became the Prime Minister. Similarly, there have been Chamberlain, Ramsay MacDonald. These are the Prime Minister in United Kingdom. They have also defected from their own party and have switched their loyalties many a times. We have been having this problem. Initially, the law was brought in. It was thought that it would be able to regulate the behavior of the politicians, but we found that whether he's convicted of any offense, whether the amount of money that he has, or the sources of those money. If a candidate will furnish that kind of information, the voter would know why this kind of candidate is my lawmaker. For example, we have had, and it is on record, I'm not just making it up, but it is a fact that we have had MPs and MLAs who have cases like rape, murder, dacoity, robbery, 420, corruption charges, so many things are there. I mean, it is Indian democracy, and we know what kind of politicians we have. And then we also have seen the growth in their assets. It's not just 20% or 30, 40, 50%. The growth from one election to another election, in those 5 years span of time, the growth is 2000% increase in the growth. How is that happening? And when you see their sources of income, or when you see their qualification, or when you see their profession, they would also mention that maybe they are heard Dr. Samal put forward. That is the less number of voting. Percentage of 29%, 29 people only voting and getting elected by 7 votes only. But one thing I would like to ask and maybe put as another problem. All the respected faculties and everyone who contributed to make this discussion a powerful one. Ending on this note that utilize the power that you have on your fingers, the power to vote. And since the 2024 general elections are on the line, I would believe that the representation made by Honorable guest Dr. Samal, as well as the representation made by on an example basis by Honorable Vice Chancellor, the 30% would be on the other side, and I believe 70% of us, rather every one of us making 100% contribution to the elections upcoming in the 2024 general elections. I believe we would cross the 1 billion mark in registering the highest number of votes ever recorded in a free democracy. Thank you. With that note, I would like to end with the permission of the Chancellor, Honorable Vice Chancellor, we would like to end the conversation. आप लोग देख सकते हो कि कल इंडिपेंडेंस डे है और इंडिपेंडेंस डे के लिए डीआरएम ऑफिस पूरा सज चुका है क्योंकि मैं सो के उठ रहा हूँ ना, इसलिए ऐसे वॉइसेस आ रही है क्लियरली नहीं आ रहे। तो ये देखो कितना सुंदर दिख रहा है, ये इंजन है और ये पूरी बिल्डिंग है। तो गाइज़ ये था आज का पूरा व्लॉग और
पैनल डिस्कशन जो होता है एक्चुअली, तो जो लॉयर बैकग्राउंड से है, लॉ के बैकग्राउंड से, उसको पता होगा कि जो लॉज है या जो कोई टॉपिक है, हॉट टॉपिक्स होते हैं, उसके ऊपर जो एस्टीम्स पर्सन रहते हैं जो कि हाईली एजुकेटेड उसमें रहेंगे, या उनका क्या बोलते एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा रहेगा, तो उन पर्सन लोग के साथ बैठ के डिफरेंट ऐसे 3-4 पर्सन्स को बुलाया जाता है एक जगह, जो कि बैठ के कुछ लॉज के ऊपर बात करते हैं, उनके डिफेक्ट्स के बारे में, उनके अच्छाइयों के बारे में, या उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। ये पैनल डिस्कशन में एक्चुअली होता है। और आज का जो टॉपिक था, एक्चुअली आज नेशनल वोटर्स डे था, टुडे इज 25 जनवरी। तो आज पूरा जो टॉपिक था वो उसके ऊपर था। तो उसके ऊपर जैसे कि जो HNLU प्रोफेसर आए थे, आई एम सॉरी कि मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने जैसे कि बताया कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो लाया गया था राजीव गांधी के द्वारा, क्यों लाया गया था, उसका क्यों इतना महत्व था। साथ में जो ऑनलाइन शिवानी कपूर जी जुड़ी थी, उन्होंने बताया कि ऐसे कितने कितने ज़्यादा रेज हो रहा है करप्शन कैसे टाइप से, और जो कि कुछ MLAs हैं उनके ऊपर करप्शन चार्जेस के साथ साथ बहुत सारे लीगल सेक्शंस भी लग रहे हैं, जैसे IPC हो गया मर्डर के लिए, और डिफरेंट ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई है। तो दिस इज ऑल व्हाट वी डू इन पैनल डिस्कशन। और उसके बारे में एक डिस्कशन हुआ कि क्या सुधार किया जा सकता है, क्योंकि लॉ स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, तो वो आगे के फ्यूचर है, तो उनके बारे में उनके लिए बताया गया। बिकॉज टाइम कम था तो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ नहीं, मेरे पास भी क्वेश्चन थे, मुझे एक्चुअल में क्वेश्चन पूछना था, तो नो प्रॉब्लम, आगे होते रहेगा। तो एक लॉयर की लाइफ में, क्योंकि म्यूजिकल लॉयर व्लॉग्स है, तो एक लॉयर की लाइफ में क्या क्या होता है, उसमें एक चीज़ ये भी है कि पैनल डिस्कशंस हम लोग अटेंड करते हैं। तो यस, ये था आज का पूरा व्लॉग। तो कैसा लगा, क्या लगा, आप लोग थोड़ा आराम से सुनिएगा क्या पैनल डिस्कशन में बात हो रही है, क्योंकि आज के व्लॉग में वही है। तो वो सुन के बताइएगा कैसा लगा, क्या नहीं लगा। ठीक है, और कुछ तो है नहीं। तो तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कमेंट आपको करना है आपका फेवरेट पार्ट क्या है, और आप इस क्या बोलते हैं व्लॉग में आप ये भी कमेंट कर सकते हो कि क्योंकि ये वोटर्स डे है और नेशनल इलेक्शन कमीशन का आज वो बना था, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या सुधार किया जाना चाहिए, क्या नहीं हो, और आपके पास क्या उसकी डिटेल्स है, तो आप ये भी कमेंट में बता सकते हैं। यस, और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि ज़्यादा के ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। यस, दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल। टिल देन, बाय बाय।